Friends, welcome to our vlog series on Antarctica once again. Our cruise journey to Antarctica started from Buenos Aires, Argentina. After arriving at Ezeiza International Airport and clearing all immigration formalities, we took a taxi to our hotel located 40 kilometers away in city center for a price of USD 40. In this vlog, wanderlust vibes of Buenos Aires to the devil's throat, we have attempted to showcase an exhilarating and thrilling presentation on the most explored sites of Buenos Aires. आखिर में हम पहुंच चुके हैं अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर के अंदर। देखिए, बगल में है कैथेड्रल और फिर ये हाई राइज बिल्डिंग्स चारों तरफ और यहाँ की हसल एंड बसल भरी लाइफस्टाइल, अ यूनिक फीचर इंडीड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत के ही किसी शहर के अंदर उपस्थित हो रहे हैं। बट a lovely sight to view, decent place, beautiful place, enjoying to the utmost. Thank you. In order to visit the city delights of Buenos Aires, we took an hop and hop off bus for a ticket price of 35 USD valid for 2 days. The Plaza de Mayo is the oldest main city square of Buenos Aires. In the surroundings are Casa Rosada, the seat of the President of Argentina, City Hall and the Cabildo that impart the most picturesque view to the location. देखिए, ये है अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स का मॉडर्न लुक। नीट, क्लीन, ब्यूटीफुल and modern and high-tech buildings you can see over here. This is the palace of the Argentine National Congress that took 50 years to get completed. The iconic obelisk marks the spot where the Argentine national flag was raised in the city for the first time. आज संडे है, चलिए आपको लिए चलते हैं ब्यूनस एयर्स के एक एंटीक मार्केट के अंदर। और ये देखिएगा, सुबह सुबह मार्केट लग चुका है, लोगों की बहुत भीड़ है यहाँ पे और धीरे धीरे ये और बढ़ेगी। देखिए, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीपल आर मेकिंग परचेजेस। ये कुछ एंटीक ज्वेलरी शॉप्स हैं, देखिएगा। Some very artistic work. This is something very crazy, very amazing to see. Old spoons, certain goggles of old styles, bells. इसके अलावा ये सारे एंटीक डिजाइन्स, वॉचेस एंड यहाँ पे फिर से कटलरी शॉप्स। देखिए, नायाब यहाँ की कलाकारी है। देखते चलिए, आइटम्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। आपको चूज करना आना चाहिए एंड देन देयर इज plenty of shopping all around. This is the prestigious La Bombonera, the football stadium which is home for Boca Juniors. Caminito is a never to be missed attraction. It is a 100-meter long street museum of colorful painted houses dominated by tango dancers and artisans. Immigrant families in the early 20th century used leftover paint from local shipyard to paint their homes, resulting in the electrifying and colorful look. La Recoleta Cemetery is the city of the dead, spread in an area of 14 acres where Argentines, many elite citizens, presidents, local laureates and heroes rest in peace. It is considered to be one of the most beautiful cemeteries in the world. It features around 4,691 vaults. People around the world do not miss paying homage to this black marble mausoleum of Eva Perón or Evita, listed as Maria Eva Duarte. She was the first lady of Argentina. The entrance ticket to see the cemetery is around 17 USD. Friends, आज हम देखने जा रहे हैं दुनिया के मोस्ट स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, जिनको कहते हैं इग्वाजू वाटरफॉल्स। ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना से 2 घंटे की दूरी पे ये फॉल्स स्थित है।
3 बजे के ही सुबह से हम उठे हुए हैं और 5 बजे तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और हमारी आगे की जर्नी सुबह 7:40 की फ्लाइट से प्रारंभ होगी और अल्टीमेटली आगे जब हम इग्वाजू फॉल्स पहुंचेंगे तो दिखाएंगे कितने मेजेस्टिक, कितने ह्यूज ये होते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड। Though costly, we opted for Argentina's Aerolíneas flight to Iguazu, which is more trustworthy in comparison to Flybondi or JetSmart. Entrance ticket to Iguazu Falls costs 4,500 pesos or 35 USD. That includes the train ride to the Devil's Throat. हम इग्वाजू फॉल्स पहुंच चुके हैं और इस समय पे मैं सेंट्रल स्टेशन के सामने खड़ा हूं। यहाँ पे हमें सही 11:30 बजे ट्रेन मिलेगी जो हमें इग्वाजू फॉल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेयरिंग स्पॉट पे लेके जाएगी, जिसे हम कहते हैं डेविल्स थ्रोट। देखते हैं आगे किस तरीके का दिखता है, कितना ट्रिमेंडस फॉल है। U-shaped Devil's Throat spans 150 meters in width and an impressive height of 82 meters. The waterfall holds 14 separate falls within. Iguazu Falls, a World Heritage Site, are situated on the border of Brazilian state and Argentine province. These span 2.7 kilometers in width and feature 275 individual waterfalls with height ranging from 60 to 82 meters. The falls can be seen from both Brazilian and Argentinian sites. This is the lower waterway, Circuito Inferior, that takes 1.5 to 2 hours to complete. The park's shorter upper walkway, Circuito Superior, is a flat path around 1.75 kilometers, taking around 1 hour to complete. Friends, we are sure that you must have completely engrossed yourselves into the Buenos Aires bliss and mystifying Iguazu mist. In the next vlog, we'll be taking you over to an overwhelmingly adventurous visit to Ushuaia, a place where the world ends. We, my wife Archana Jain and myself Narendra Jain, thank you for sharing your precious moments with us.